So student, this is the that last chapter of your the syllabus, the respiratory system, and we will see what are the topics included in this chapter. So respiratory system, it has organs, mechanism of breathing, tissue respiration, and the heat production. So we will see here the structures of the respiratory system, differences between anaerobic respiration in plants and in man, and role of diaphragm and intercostal muscles in breathing to provide a clear idea of breathing process, brief idea of gaseous transport and tissue respiration, brief understanding of respiratory volumes and effect of this altitude on breathing in terms of asphyxiation and hypoxia. So these are the topics in your syllabus. So whenever I discuss syllabus with you, you just mark these topics in your book. In your book also the learning objectives given there. So at that place you put a tick whatever I am describing here. Now we'll start with the process of respiration. So students, about respiration you have studied already in chapter 6, respiration in plants. So that basic, that plant respiration, types of respiration, aerobic, anaerobic, already I have explained you in detail. So this time I will not explain that much. You see that video again, chapter 6, respiration in plants, which is posted by me already. And here we will see the things outline, and then we will come to the main topic. So what is the respiration? Respiration is the release of energy from food substances in living cells. So you know that the process of releasing of energy by breaking down of glucose for carrying the life processes is termed as the respiration. यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने से जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द आवर body cells in order to perform various functions. So underline the definition in your book also, page number 158. In the paragraph it is given, first paragraph definition is given in the dark letters. This you underline. And respiration is a vital process in all living beings. So we will see here that the respiration which involves oxygen in it, it is termed as the aerobic respiration, and the respiration taking place without oxygen, this is known as the anaerobic respiration. So aerobic respiration requires oxygen and release more energy than the anaerobic respiration. This comparison you have studied already. Fine. So that's why I told you that that detail I will not do here, that you will see that particular video. So aerobic respiration requires oxygen, while anaerobic respiration, it does not require oxygen. So what is happening in the respiration? That sugar, which is the glucose, oxidizes here and releases carbon dioxide, water and energy. This energy is released in the form of ATP, and you know the ATP, this is known as the energy currency of the cell, adenosine triphosphate. Here the formula of glucose C6H12O6 reacts with oxygen and produces carbon dioxide, water and energy. It's balanced. This balanced reaction you have studied already, that the 1 molecule of glucose plus 6 molecule of here oxygen releases 6 molecule of carbon dioxide. So that will be the balanced equation. 6 molecule of oxygen, and that products are 6 molecule of carbon dioxide, then the 6 molecules of water, and then the energy is released in the form of ATP, or in that kilojoule or kilocalorie also you can measure it. So this is the reaction given in your book already on page number 159. So this is about the respiration. Now types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration, which is explained by me in detail already. So here some points just explain in front of you for revision. So here that oxygen is required in aerobic respiration, and more energy, more ATP are formed during the aerobic respiration, while
anaerobic respiration is the respiration where no oxygen is required and energy which is released is very less. Okay, so these types of respiration and their differences given on page number 160. Kindly note it down. Here, mark it, anaerobic respiration and aerobic respiration. Now, when we talk about the products of the aerobic and anaerobic respiration, तो जो aerobic respiration होते हैं वहाँ पर जो products हैं, just now I showed you कि water और carbon dioxide है, but anaerobic respiration के अंदर जो है इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इथेनॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है. सो पेज नंबर 160 हियर यू सी टेबल 14.2 डिफरेंसेस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन जब प्लांट्स में स्टडी करोगे देन यू विल सी कि यहाँ प्रोडक्ट्स में इथेनॉल एज वेल एज CO2 दोनों रिलीज होता है, बट एनिमल्स के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती. एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में मोर एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज करता है, while there is less heat energy is released in the animal cells during anaerobic respiration. Now, anaerobic respiration in plants releases carbon dioxide which causes foaming effect there, and as no carbon dioxide is released, so no foaming effect in the anaerobic respiration in plants. So this is important one, kindly note it down. And energy release also is quite different in aerobic and anaerobic. In 159, see here page number 159, you will see the complete equation. C6H12, it undergoes glycolysis, two pyruvate molecules are released, that undergoes Krebs cycle in mitochondria and then releases energy. So reaction 3 and here reaction 4 on page number 160. Kindly mark them. These all are explained by me already, and still if you have doubt you can ask, okay, anytime. Now we will come to the respiration in human beings. So here the 4 stages of respiration: breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. Breathing क्या होती है? This breathing is actually the mechanical process, physical process which involves the inspiration or known as the inhalation also when we inhale the air, and when we leave the air then this is expiration or exhalation. तो एयर की जो एंट्री होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दैट इज इंस्पायरेशन, और जब एयर लीव करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दैट इज एक्सपायरेशन और एक्सेलेशन. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस जो है इसमें नेक्स्ट स्टेज है वो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो है वो लंग्स और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो यू नो कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एंटर करती है लंग्स में, लंग्स के थ्रू ब्लड में, और ब्लड के अंदर जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूज होती है लंग्स में, देन गोज आउट विद द एक्सपायरेटरी एयर. So this is external respiration. Internal respiration is what? So internal respiration जब ब्लड और बॉडी टिश्यूज की जो सेल्स है उनके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, मीन्स जो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू टिश्यू तक पहुंचती है, सेल्स तक पहुंचती है, और वहां जो एक्सचेंज होता है दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. एंड एट लास्ट वी विल सी द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. जब ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंच जाती है, इट रीचेस टू ईच सेल्स इन द टिश्यू, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिलीजेस एनर्जी. तो यहाँ पर ये एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, which is termed as the cellular respiration, which involves the two phases, glycolysis and the Krebs cycle. Just now I explained you. This is known as the cellular respiration. So respiration involves that mechanical process, physical process, as well as the cellular process. So this mechanical or physical process is termed as breathing. Just now I explained you कि inhalation और exhalation जो करते हैं ये physical process है, and this physical process is termed as the breathing. So breathing is the physical process which involves the intake of air and giving out of air, means inhalation and exhalation. Page number 158, table 14.1. The clear difference between breathing and respiration is given. So respiration is not breathing, because respiration is the chemical reaction that creates energy. Just now I explained you, oxidation of glucose releasing the energy,
and this is used by our that working muscles making use of oxygen. So breathing is the part of the respiration process. It is how we get oxygen into our bodies and how we get carbon dioxide out. So completely physical process. तो ब्रीदिंग के अंदर एक्सचेंज होता है गैसेस का, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, नो एनर्जी इज रिलीज एंड नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. वाइल रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है. ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है, देन energy is released. Exchange of gases may take place by mechanical process or simple process of diffusion in respiration. Energy is released in the form of ATP. Enzymes are involved in this process. Yes, many enzymes are involved in the glycolysis and Krebs cycle. So these all are the differences I have discussed already. Breathing, intake of fresh air, removal of foul air, oxidation of food to form carbon dioxide, water and energy in respiration. This is physical process. This is biochemical process. No energy is released here. Here the energy is released in the respiration in the form of ATP. This is the process taking place outside of the cell, extracellular. This is taking place inside the cell, intracellular. No enzymes involved. Here large number of enzymes are involved. It is confined to certain organs, but it occurs in all the cells in the body. So these are the differences between breathing and respiration. Mark it in your book also. Then we will see the phases or stages of the respiration. Yes. Respiration occurs in two phases in the cells. These are the glycolysis and the Krebs cycle. So glycolysis is the first stage and Krebs cycle is the second stage. Glycogen, which is the source of glucose, polymer of glucose, releases glucose in the blood. Fats also, they form glycerol and then it undergoes that reactions and form the pyruvate. तो पहला जो स्टेज है वहां पर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में. 2 molecules of pyruvate are formed and this reaction is known as glycolysis. It occurs in cytoplasm. तो जो glycolysis है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. ओके, ये जो है ऑक्सीजन नहीं डिमांड करती, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस में. अब जब पायरुवेट मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, दे आर चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है इट एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, बट this process is taking place in the mitochondria. About mitochondria you have studied already in the chapter 1, that is cell and its cell organelles. So ये Krebs cycle जो है further pyruvate को break down करता है different products में to produce ATP, carbon dioxide, and in this process it requires oxygen. So oxygen is always required in the Krebs cycle and ATP and other products are formed, and then after that electron transport system is there where that ATP molecules are formed. So these are the two stages or two phases, glycolysis and the Krebs cycle. This is already explained by me in detail in previous chapter. Now we will come to the that main heading of your chapter, that is the respiratory system in human being. So open the page number 160 in your book and see here. Respiratory system in human being comprises nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar sacs or alveoli or lungs. So it starts from the nose. So after nose you see the first two pores in the nose at front, they are known as the nostril. From nostril air enters into the nasal cavity. Then nasal cavity, from nasal cavity air enters into the pharynx. From pharynx it undergoes it further goes into larynx. So larynx, which is known as the voice box also. From larynx air enter into the trachea. So this is trachea or windpipe. This trachea further divides into the two lateral branches which are known as the bronchi, or one branch which is known as the bronchus right and left. This bronchus further
divide into the various that short branches. Bronchi they divide, and in primary, secondary bronchi, and then after they form the bronchioles, and these bronchioles further they end into the alveoli. And one more structure, which is the muscular stretch there, just below the lungs, this is known as the diaphragm. And yes, of course, lungs are the important respiratory organs. Okay, all these structure, nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, they form respiratory tract जिसके थ्रू की air pass होती है, and air goes into the lungs. These lungs are actually the respiratory organs. So let we see their detail again. So nostril and nasal cavity, you can see here that this is here the nose, fine. So nasal passages, they open outside through the two nostrils which are separated by cartilaginous septum. तो हमारे जो दोनों जो है nostrils होते हैं वो separate होते हैं cartilaginous septum से, और इनकी जो inner surfaces होती है nasal passage की, वहां पर hairs present होते हैं. तो they are hairy, made up of ciliated epithelium and mucus secreting cells. Hairs का क्या function होता है? Okay, hair and the cilia, they are functional. So cilia and mucus, they check the entry of microbes. तो सीलिया जो होते हैं और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करती है, वो माइक्रोब्स की एंट्री को रोकते हैं, डस्ट पार्टिकल को भी एंटर नहीं होने देते हैं. एंड इफ डस्ट पार्टिकल एंटर इन द नेसल कैविटी, दे गेट स्टक टू द हेयर एंड द म्यूकस एंड थ्रोन आउट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया. तो ये फंक्शन है सीलिया एंड हेयर्स के. म्यूकस जो है, mucus and the rich blood supply inside the nasal passage keep the inhaled air moist and warm also. So ये mucus के साथ जो nasal passages के अंदर ये structures हैं, ये air को warm और moist रखते हैं. And that warm and moist air, it enters into the passage further. So अब आगे का passage क्या है? That is pharynx. So about pharynx, you remember I have explained you in digestive system in detail. So जो pharynx है, it is the that common opening of the nasal passages into it, as well as the oral cavity also opens into it. So in the pharynx, both the tract, digestive tract and respiratory tract, both are opening. Pharynx opens into the larynx or voice box. Yes, kindly put off your audio there. It is disturbing. Pharynx open into the larynx or voice box which leads to the trachea. तो pharynx further यहाँ पर जो है next connected होता है larynx से. Larynx, you know, this is the voice box. So by which the voice, that sound it is produced, which is known as the Adam's apple also. तो ये जो larynx है, एक cartilaginous box like structure है, tracheal opening पर present होता है. It is hollow from inside, and when we swallow some food material, then the larynx moves up or down, allowing the safe passage of the air or food. That you know, this is done with the help of glottis. So here you will see that the epiglottis is the cartilaginous flap which is present above the ग्लॉटिस. ग्लॉटिस क्या होती है? जो ओपनिंग होती है स्लेट लाइक ओपनिंग लैरिंग्स की, दैट इज ग्लॉटिस. तो ग्लॉटिस के ऊपर ये कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है, एपीग्लॉटिस. तो जैसे ही हम फूड को स्वॉलो करते हैं, तब ये हमारा लैरिंग्स अपर साइड में मूव करके, और इसकी जो ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाती है एपीग्लॉटिस से, और जो फूड है वो सीधे ईसोफेगस में आता है इंस्टेड ऑफ trachea. So this mechanism I showed you already. So this epiglottis cover the trachea to prevent the food or water from entering the respiratory tract. Then we will come to the next structure, trachea. Trachea is known as the windpipe also. ये long tube है, extend from larynx to the thoracic cavity. ये ventral side पर होता है esophagus के. And its wall is provided with incomplete C-shaped cartilaginous rings. So you can see here
कि यहाँ ट्रेकिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, यू कैन सी हियर द लाइंस विच आर सीन हियर, दे आर एक्चुअली द कार्टिलेजिनस दैट रिंग्स. ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो सी शेप्ड होती हैं एंड देयर फंक्शन टू कीप द ट्रेकिया इन डायलेटेड पोजीशन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग. तो ये इसको चिपकने से बचाती, डायलेट कंडीशन में रखती तो एयर जो है वो सीधे उसमें एंटर हो पाए. ट्रेकिया is lined with the ciliated epithelial cells, and mucus secreting cells are also present in it, and they help in preventing any dust particle or microbes from entering the lungs. So यहाँ पर भी ciliated epithelium मतलब cilia है, mucus भी present है by secreted by the mucus secreting cells. Now these trachea further this trachea further divides and form the two main branches. These are known as the bronchi. So जो bronchi हैं, there are two tubes and right, they are known as the right bronchus and the left bronchus. तो जो right lung को जाएगी, that is right bronchus. So this is the right lung, this one is the left lung. So right lung में जाने वाली राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट लंग को लेफ्ट ब्रोंकस. तो राइट ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होकर के तीन ब्रांचेस फिर से बनाती है, 3 ब्रोंकाई, एंड फर्दर इट अंडरगोस दैट फर्दर ब्रांचिंग एंड रीचिंग टू द राइट लंग. एंड लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होकर के पेनिट्रेट करती है दोनों लोब्स जो लेफ्ट लंग के, क्योंकि जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स हैं. Fine. You can see here these lobes are marked by these fissures, 1, 2 and 3 lobes. Here the left lung has only 2 lobes, 1 and 2. So इस तरीके से ये ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड होती हैं एंड ये ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होती है. तो यू कैन सी हियर कि ब्रोंकाई डिवाइड होकर के बनाती हैं ब्रोंकियोल्स. यू कैन सी दिस इज ब्रोंकियोल. सो दिस ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड्स and then it forms the alveoli. तो ये ब्रोंकियोल जो है अपने टर्मिनल एंड पर फिर से जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, थोड़े से वाइड होते हैं, ये वाइड स्पेसेस होते हैं, और ये वाइड स्पेसेस जो होते हैं ये एल्वियोलाई. ये वाइड क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है. एक्सटर्नली दे सीन जस्ट लाइक द दैट बंच ऑफ ग्रैप्स एंड इंटरनली यू विल सी द वाइडर एरिया. They occupy alveoli. So they are the actual sites of respiratory exchange. यहाँ पर जो है gaseous exchange होता है. So alveoli जो है ये functional unit है lungs की, and they are lined by the single layer of moist squamous epithelium, and each alveolus has a dense network of blood capillary. Externally जो है ये blood capillary से surrounded होते हैं alveoli, and 700 million alveoli present in the lungs, and the total that surface area of the all alveoli is about 80 square meters, which is nearly equal to the area of tennis court. So we can understand कि alveoli का जो role है वो कितना important है gaseous exchange में. So students, here also you can see that the bronchioles further at their terminal and they form the alveoli. Externally they seen like this bunch of grapes. Now here we will see the lungs. So lungs जो हैं वो they are pair of elastic hollow membrane bag like structure, and they are situated in the thoracic cavity around means on the both the sides of the heart. So heart is located here in the center, and at on the both the sides of heart these lungs are located in the thoracic cavity. The broad lower surface of the lungs rest on the sheet of muscles which is known as the diaphragm. तो ये एपेक्स जो है इनका अपर पार्ट जो होता है वो पॉइंटेड होता है जिसको एपेक्स कहते हैं. जो लोअर पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, जिसे कहते हैं हम बेस, और इनका जो बेस होता है लंग्स का वो डायफ्राम पर लाई करता है. सो ये डायफ्राम जो है शीट ऑफ मसल्स है, और जो राइट लंग है इट इज बीइंग लार्जर देन द लेफ्ट लंग. तो ये है राइट लंग and this is the left lung. So right is being larger than the left one. Right lung is divided into 3 lobes. Right lung के अंदर 3 lobes होते हैं, 1 and 2 and 3. You can see 3 lobes: superior, middle, inferior. No need to learn these terms, I am just showing it to you कि 3 lobes होते हैं. और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर होते हैं 2 लोब. यहाँ देखो आप, सुपीरियर लोब and the second is their inferior lobe.
है ना। यहाँ पर क्लियरली आपको दिखेगा डिवीजन, ये फिशर यहाँ पर बना हुआ है जिससे कि फर्स्ट लोब और सेकेंड लोब दिख रहे हैं, तो 2 लोब्स होते हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट लोब है वहां पर आपको कार्डियक नॉच दिखेगा, एक कॉन्केविटी दिखेगी लोअर साइड पर जो कि कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट लोकेटेड होता है, ये हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, इफ यू रिमेंबर यू हैव स्टडीड। तो उस हार्ट को जो यहाँ पर स्पेस देने के लिए कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग के अंदर। अच्छा, लंग्स का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, they are surrounded by the membrane, these membranes are known as the pleural membrane। तो यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं, they are known as the pleural membrane। okay, these pleural membrane they occupy a cavity which is known as the pleural cavity। और इस cavity के अंदर एक oily substance fill होता है जिसको कहते हैं pleural fluid। और ये प्लूरल फ्लूइड जो है इट वर्क्स एज अ ल्यूब्रिकेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, क्योंकि लंग्स में लगातार मूवमेंट होता रहता है, तो वो मूवमेंट जो है उसके कारण, फ्रिक्शन के कारण जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। फ्रिक्शन के कारण जो आउटर लेयर है वो लंग्स की डैमेज हो सकती है, लेकिन ये डैमेज इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इसको। सो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फाइन। Now, next we come to the mechanism of breathing and the gaseous actions in the lungs and the tissues. This portion we will complete further. Okay.